नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल न्यू टाउन में सीबीएसई टॉपर्स के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल मिस सैंतिका भट्टाचार्य ने उपहार देकर छात्रों को सम्मानित किया। शिक्षकों और छात्रों ने तालियां बजाकर टॉपर्स की मेहनत और लगन की सराहना की। टॉपर्स ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। Many more milestones to achieve. I'm sure they are ready to take the challenges. They are the learners who are ready to take up the challenges of life. So my best wishes. We have a small celebration ready here today. Good morning. My name is Shayantika Bhattacharya and I am the principal of Sri Chaitanya Techno School, New Town. As you asked, madam, that what is the reason and the source behind this kind of wonderful results, where out of these many number of students, I have 95% and above students getting more than these results. So the reason behind that, I must say, definitely the hard work of the students. It couldn't have been possible if the students were not disciplined enough, if they were not putting in the right amount of hard work, and they have understood and they have been mentored to perform under pressure. I believe they have understood this, and through years of practice, the special thing what I like about this particular result is that this batch has been very dear to us. Why? Because these students whom we have been nurturing since their primary days of schooling. So they are very special to us, and all these students, they are all-rounders. The topper 497, Rishant Srivastav and Angel Singh, followed by 494, Shushavan Chatra and Prakriti Rakshit. The next in the line is 492, that is Nirjar Karmakar and Namrata Kundu. So they have all been all-rounders. Some has been the school captain, the other has been wonderfully taking part of the school co-curricular activities. And these students, I'm sure they have many more milestones to reach, but I'm proud and happy the parents have had the faith in the school, in the organization, which is Sri Chaitanya Techno. And the support which the central office, the research and development team, because they have also worked upon a very student-friendly, specially curated curriculum, which is aligned with the National Education Policy 2023. And ultimately, it is exceedingly happy to announce that this year, around 398 students all over Sri Chaitanya Techno School in West Bengal appeared, out of which 101 students have managed to secure 450 and above. 78 students got 460 and above. 8 of the students have secured 490 and above. And I'm extremely proud to say that 2 of my branch toppers, Angel Singh and Rishant Srivastav, they managed to secure 497 out of 500 this year. So it is extremely happy moment for us, and I give the entire credit to my team of teachers, of course the parents who had the support and confidence on the entire institution, and we are extremely happy for all the guidance and support of the school curriculum, the research and development team, and our AGM sir, respected Ravi Kiran sir. Success story. मुझे अच्छा लग रहा है, सब टीचर्स के सपोर्ट से, पेरेंट्स के सपोर्ट से ये अचीव हुआ। स्टार्टिंग से तो एनसीईआरटी पे ही चल रही थी, टीचर्स जैसा बोल रहे थे, क्योंकि स्कूल अच्छे से पूरा गाइड करता है कि कैसे क्या पढ़ना है।
फिर प्री बोर्ड के टाइम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू किया था, PYQs वगैरह किए थे, और बाकी तो टीचर जैसे बोल रहे थे वैसे ही कर रहे थे। सबसे पहले मैं एंजल सिंह की मदर मंजू अरोरा, और मेरी बेटी श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल न्यू टाउन में पढ़ती है। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन उसका पूरा क्रेडिट मैं यहाँ के फैकल्टी को भी देना चाहूँगी। उसका हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन कहते हैं ना कि सही दिशा पे ही हार्ड वर्क हो तो ही अच्छा है। टीचर्स ने बहुत ही गाइड किया थ्रू आउट द ईयर उसको, न सिर्फ स्कूल से बल्कि हेड ऑफिस से भी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो रेगुलर स्कूल में रही। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उसने इतना अच्छा स्कोर किया। The only thing I want to say is that I'm happy that I've done this. I've tried a lot, I've faced many ups and downs, but still I've come up to this level. That's the satisfaction that I get after this result. School teachers have had a great contribution. जैसे कि आपने कहा कि कैसे ये उन्होंने हेल्प किया, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि बहुत हेल्प किया। कि जैसे सेशन होते थे, जैसे रिवीजन प्रोग्राम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो उसमें जैसे टीचर्स ने रिवीजन कराया कि एक बार करिकुलम तो हो गया पढ़ाना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाया बार बार, 3-4 बार ऐसे पढ़ाया, जिससे कि लाइक क्या हुआ कि हमें वो कॉन्फिडेंस आया, जिससे कि हम अच्छा कर पाए बोर्ड। Thing to say, it's all because of my teachers. Their teaching and my effort together gave me these marks. That's all. I'm nothing to say about it. The first thing I would say is consistency. Without consistency, it's not possible. And a daily routine which I followed every day. Even my marks also came late, but I did not break my routine and my consistency. I kept it at the same level, and then marks came as unexpected, and that's how I got it. टीचर क्लास 8 से श्री चैतन्य में एडमिशन लिया है और तभी से पढ़ रहा है, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। और टीचर को होम ट्यूशन नहीं दिया है और स्कूल में जो पढ़ाई किया है वही कंटिन्यू किया है। टीचर लोग के विदाउट सपोर्ट ये इतना तक नहीं आ सकता था।